Hello everyone. Very good morning for all of you. Very good morning for all of you. Welcome to Unacademy, and our today's topic of discussion is evolution of the Indian economy. One of the most important topic to discuss with respect to prelims as well as with respect to your mains examination. So let's start the discussion on the evolution of Indian economy. So one important announcement before starting this topic, key from the next month, from the March onwards, Unacademy is going to increase the course fees. So enroll yourself to different batches. Subscribe to Unacademy Plus. Use the referral code EGOS so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. So you have only 3 days left, 26th, 27th and 28th of February. Join to Unacademy Plus and let's crack the exam you have already dreamed for. So evolution of Indian economy वर्तमान में discuss करेगा. Before that we should discuss about the what was the economic condition of India during the British rule period, British time period. First we have to understand those things. British time period, it is always characterized by drain of wealth from our country to Britain. And especially it is due to various economic policies which are formulated by the Britishers. Britishers mane adopt करथिबा different type of financial policies, different economic policies. It acted as a policy which deteriorated the Indian economic condition or Indian economic financial health of India. Financial burden, it was placed upon India. British military officials, civilian staffs, semanakar salaries, semanakar pension jaha kharcha hotula, expenditure, all the expenditure, the burden of all the expenditure, it was placed on the shoulder of India. That is why there was drain of wealth from India to Britain. And this theory of drain of wealth, it was for the first time, it was coined by the term drain of wealth, it was coined by Dadabhai Naoroji. There were many economists of India during that time period who discussed about the drain of wealth from India to Britain. The basic objective of the drain of wealth theory was India's national wealth, a large portion of India's national wealth or the total annual product that was exported to England. So this is the reason for which Indians got no adequate economic and material return from them. So that is why Indian economy, it started deteriorating gradually. Jodi hame dekhiba per year drain of wealth from India to Britain, it was approximately 1 lakh crore in pound. If the interest miseva, raw material miseva and other factor miseva, then it will be more than 5 lakh crore per annum during that time period, before 100 years. So Bartman time period jodi ame dekhiba, then its value will be quite more. So this drain of wealth from India to Britain, it deteriorated the economic condition of the country, deteriorated the financial health of the country gradually. India financial stability धीरे धीरे कम होगा लागला, whereas देखो जो country जो मानकर imperialism थिला बा जो country मानकर colony थिला in different other countries, in some other countries, एमाने develop करियो लागले. The reason was they were gathering, accumulating wealth and taking it from some other countries. अलगा country wealth आने के तांका country से माने deposit करियो लागले. So accumulation होगा कारणरू मानकर
डेवलपमेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ी चलथिला व्हेयरएज जो द कॉलोनाइज्ड कंट्री जो कंट्री मानकर कॉलोनाइजेशन हेतिला से कंट्री मानकर डेवलपमेंट हैम्पर्ड होतिला बस से कंट्री माने इकोनॉमिकली एते स्ट्रांग नथिले और डेवलप करि पारु नथिले दिस वाज द मेजर कॉज सो द ड्रेन ऑफ इंडिया's wealth it was major cause of poverty it was major cause of India's poverty the drain of wealth from India to Britain. Then deindustrialization. Deindustrialization means less importance to industries, or I can say at that point of time there was no industries developed in India. Deliberately, Britishers, what they were trying to either diminish or decrease the number of industries in India, or they were trying to establish no industry in India. It is dita reason thila. The first is the raw material. Britishers, they were taking raw material from India to their countries. From India to their countries. तो जो raw material नौथिले the raw material price जदि हम देखिबे then it was cheap. बहुत कम टंका रे से माने raw material India रो नै जाउथिले. Then आकु नेला परे से माने finished goods production करूथिले सेतेरु and those finished goods were used for they were again exported to India in a very high price, very high price. अधिक टंका रे finished goods को एमाने पुनी इंडिया को बिक्री करथले एठी देखंतु प्रथम तो रॉ मटेरियल कम टंका रे मिलला द्वितीय तो हाई प्राइस रो समान फिनिश्ड गुड्स को इंडिया को पठेले सो द इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वाज मोर जदि इंडिया रे इंडस्ट्री हे जाय देन प्रथम कथा रॉ मटेरियल इंडिया रो ब्रिटेन जाय परियोनी द्वितीय कथा फिनिश्ड गुड्स जे हम देखछन ये फिनिश्ड गुड्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड हेंस जेहेतु फिनिश्ड गुड्स इंडिया रे प्रोडक्शन हबो ये इंडियन माने आ ब्रिटेन नो इंपोर्ट करिवेनी सो ग्रेजुअली देयर इकोनॉमी विल नॉट ग्रो और डेवलपमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी दैट विल बी स्टैग्नेंट ये कारण पई इंडिया रे कंप्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थिला देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली दीटा पर्पस रे करा जाय द फर्स्ट टाइप इज द सब्सटेंशियल फार्मिंग and the second one is the commercial farming. So substantial farming means whatever we'll consume, whatever we'll produce, we'll consume that. The production are only consumed. Then commercial farming, it is market oriented. It is always market oriented. Market oriented means what? Market रे बिक्री करिया पय जहा प्रोडक्शन में that is market oriented. So Britisher माने they were giving more importance, more thrust to commercial farming in India. Commercial farming कले किछि specific crop रा commercial farming होतला जेमति कि cotton, indigo, ओपियम ज्यूट सिल्क ये सब कमर्शियल फार्मिंग रे बेनिफिट कोन होतला ना इंटरनेशनल मार्केट रे इंडिया रे प्रोड्यूस होतबा कॉटन इंडिगो ओपियम ज्यूट सिल्क एमानकर इंपोर्टेंस बहुत अधिक थिला बा एमानकर वैल्यू जदि हम देखिबा वैल्यू वाज मोर सो फॉर दैट पर्पस एमाने कोन करथले दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम इंडिया their commercialization agriculture को focus करिया कारण कोन ना ए सब प्रोडक्शन से माने इंडिया रो करि परबे एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट से माने तार इंटरनेशनल ट्रेड करि परबे सो दैट दे विल बी मोर बेनिफिटेड तो तीन काठिया सिस्टम ऊपर सुनिथिबे हिस्ट्री रे सो टोटल प्रोडक्शन नो मैक्सिमम पोर्शन जोथरे टैक्स दवा पड़थला टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स इट वाज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर it was exploitative in nature. Very good morning Rajesh. I am discuss करछंती evolution of the Indian economy केमते evolve होइतला
So evolution of the Indian economy discuss करिया पे हेले we have to understand 1947 पूर्वरु Indian economy रो condition कौन थिला and post 1947 what is the condition of Indian economy इटा हमको बुझिया पड़िबो तो यार ऊपर डिस्कशन चलीची या पूर्वरु मु बुझे सारची कि 1947 समय रे when Britishers were there then commercialization of agriculture deindustrialization and drain of wealth la India drain of wealth माने India रू wealth Britain को नवा then deindustrialization माने India रा industry को promote न करिबा दीटा कारण पई करनथले से माने प्रथम कारण थिला तो फर्स्ट कॉज वाज रॉ मटेरियल से माने इंडिया रो जो रॉ मटेरियल नउथले बहुत कम टंका रे नउथले चीप रॉ मटेरियल एंड ये रॉ मटेरियल नै के से माने प्रोडक्शन करथले फिनिश्ड गुड्स अगेन दे वर सेलिंग दोज फिनिश्ड गुड्स टू इंडिया सेम फिनिश्ड गुड्स को से माने इंडिया को अगेन एक्सपोर्ट करथले सो दैट एटू से माने को इनकम बहुत अधिक आस्तला कम टंका रे पाइले रॉ मटेरियल अधिक टंका रे पुनी इंडिया को फिनिश्ड गुड्स पठेले से माने बेनिफिट अधिक थिला then commercialization of agriculture पर वर्तमान डिस्कस कले ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पर डिस्कस कले सोशल सेक्टर इट वाज completely neglected social sector especially the health and the education sector it was neglected so it is a very well said proverb in the international context कि if you want to destroy a country if you want to destroy the future of a country then just destroy its educational system then just destroy its educational system गोटे कंट्री रो एजुकेशनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करि देले से कंट्री ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हे जिवो इन द सेम वे हेल्थ सेक्टर मध्य हेल्थ एंड एजुकेशन दे गिव्स ह्यूमन रिसोर्स एंड दिस डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स और skilled human resource they lead to growth in the economy it leads to growth in the economy growth हुए प्रथमतः then economic growth prathamatha for the skilled human resource then automatically it will lead to more per capita income more national income and associated economic growth and development hence the HDI will be more for the country then before independence देखिबा बर्तमान हम एपर्यंत डिस्कस करथिले कि इंडिया रो सिनेरियो कोन थिला बिफोर 1947 बाय द ब्रिटिशर्स नाउ विल डिस्कस कि इकोनॉमिस्ट मानक व्यू रे इकोनॉमिक पॉलिसी को टाइप रो हवा दरकार बिफोर 1947 द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देम वी शुड गिव इंपोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर प्रथम तो हम पब्लिक सेक्टर को इंपोर्टेंस देबार आवश्यकता रही द फर्स्ट रीजन इज व्हाई टू गिव इंपोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर बिकॉज़ वी हैव प्राइवेट सेक्टर एज वेल so private sector को importance नदी public sector को importance दबार केवल कारण because private sector will interfere in the economy only when the economy is developed or the basic amenities are available basic amenities कहले जेमति कि हम कहबी infrastructure road railways electricity ये सब available हवा दरकार and during 1947 all these things were not available in India ये सब इंडिया रे अवेलेबल नथिला सो इंफ्रास्ट्रक्चर कोंतु रोड कोंतु बेसिक इंडस्ट्रीज दे वर नॉट डेवलप्ड इन इंडिया सो पब्लिक सेक्टर को इंपोर्टेंस दवार कारण कोन थिला ना ऑल दिस इंडस्ट्रीज वी कैन गिव इंपोर्टेंस ये को पब्लिक सेक्टर फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी जहा बेसिक इंडस्ट्री अछि से सब को प्रथमे पब्लिक सेक्टर डेवलप करिवो एंड पब्लिक सेक्टर डेवलप करि सारिला परे वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइवेट सेक्टर टू इंटरफियर प्रथम कारण द्वितीय कारण जदि प्राइवेट सेक्टर को हमें से समय इंपोर्टेंस दे दउचंती प्राइवेट सेक्टर इफ इट इज गेटिंग मोर इंपोर्टेंस ड्यूरिंग पोस्ट 1947 टाइम पीरियड ताहले प्रॉब्लम कोन हो देयर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ and concentration of wealth means private sector they will entirely manage the economy or economy will under the private sector so economy private sector under को पळे आसीबो then they may force the public sector to act as per the private sector अनुसार से माने public sector को बाध्य करि पारंती काम करिया पई and automatically concentration of economic power as well as ए power concentration economic हेइ पारे बा ये पावर कंसंट्रेशन पॉलिटिकल हे पारे सो पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेशन बा इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन ये का हाथ को आस जीवो ना ये आस जीवो पब्लिक सेक्टर हाथ को आस जीवो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन बा पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेशन येला प्रथम कथा देन सेकंड
आम डिस्कस करबा एफडीआई ऊपर ये कारण पे हम पब्लिक सेक्टर को इंपोर्टेंस देबा चाहूतले ना कि प्राइवेट सेक्टर को एथि पे इंपोर्टेंस न दे हम पब्लिक सेक्टर को देबा चाहूतले द्वितीय एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर माने फॉरेन इन्वेस्टर्स दे इन्वेस्ट इन इंडिया तो यदि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया रे इन्वेस्ट करंती देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम काहे कि हम फॉरेन इन्वेस्टर मानको इंडिया रे इन्वेस्ट करिया पई मना करथिले बा इंटरेस्टेड नथिला इकोनॉमिस्ट मानकर बिकॉज़ फॉरेन इन्वेस्टर लेट्स से एफडीआई foreign investor invest karichi India re and out of that it is getting 10% interest aku 10% benefit miluchi jodi 10% benefit mile and all of sudden they got another opportunity all of sudden they will get another opportunity and ye opportunity anusar from other countries let's say they are getting 20% benefit so manu 20% benefit miluchi to definitely 20% benefit jodi alga jagar mile they will leave Indian economy. They will leave Indian economy khalita jibani along with the capital which is invested. So all of a sudden there will be a vacuum will be created in the Indian economy or a void will be created in the Indian economy and it will be difficult for us to manage it. It will be difficult for us to manage it and all of a sudden Indian economy it will start deteriorating by Indian economy ro condition it degrade kariba lagibo dhire dhire jodi Indian economy ro condition it degrade kare then there will be gross loss to the economy so ये कारण पे हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अधिक इंपोर्टेंस दवा पे इकोनॉमिस्ट माने चाहू नथिले आ ए जो मनी एटी देखले दैट मनी इज नोन एट इकोनॉमिक्स रे कोंदी हॉट मनी this money is called hot money and when they will come back with the hot money then a void will be created in the Indian economy. यह प्रथम कथा for this purpose economists were not of the view to give importance to the private sector FDI foreign direct investment. Then second point is about the protection of domestic investors कौन प्रोटेक्ट करिया चाहू ना प्रोटेक्शन of the interest of domestic investors केमती हमें यार डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करि परिबा बिकॉज़ यदि एफडीआई अलाउ हुए देन डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स दे आर मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओवर द इंडियन काउंटर पार्ट एमाने अधिक पावरफुल हेबे तो जेहेतु एमाने अधिक पावरफुल हेबे दे कैन इन्वेस्ट मोर एंड the strength of the Indian investors will be less as compared to the foreign investors. That is why it will create a problem and Indian investors they cannot grow. Indian investor मानकर interest को protect करिया पाई बा सेमानकर development पाई FDI को allow न करिया पाई economist माने view देइतले. Then development of the heavy industry को development दवार आवश्यकता कोन प्रथम कथा हला during 1947 the world has already witnessed two world wars World War I and World War II. World War I और World War II हमको सिखाइतला कि the country which are जहार military power अधिक those countries are more powerful. जो कंट्री मानकर मिलिटरी पावर अधिक those countries are more powerful. मिलिटरी पावर सही कंट्री मानकर अधिक जो कंट्री मानकर हेवी इंडस्ट्री अछि because military power it is completely based on arms and ammunitions. So arms and ammunitions केमती आसीबो ना from the heavy industry. Arms and ammunitions heavy industry जो कंट्री जते डेवलप सेटु आसीबो इहला प्रथम कथा. So militarily strengthen हवा पई इंडियन इकोनॉमी हमकु हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट दरकार. द्वितीय is related to the infrastructure. जदि गोटे कंट्री डेवलप होबा को चाहूची बा गोटे कंट्री डेवलप होबा देन यार इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित भाव डेवलप होबा दरकार. इंफ्रास्ट्रक्चर माने रोडवेज रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी ये सब डेवलप होबा दरकार. जे पर्यंत हेवी इंडस्ट्री डेवलप न होईची से पर्यंत ये इंडस्ट्री माने डेवलप हे परिबे नाही. Other industries they will not be developed. So for that purpose we have to give importance to the heavy industries. Then the fourth factor is
Government should take the direct responsibility of development. Development ro responsibility directly kaha pakhar rahଇବା ଦରକାର ନା government ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି because ଦେଖ responsibility ଏଠି private sector ପାଖରେ ରହିପାରେ বা government sector ପାଖରେ ରହିପାରେ but ଆମେ ଏଠି importance ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା government sector government को importance ଦବାର कोन कारण ना प्रथम कथा हला private sector रो जदि हम characteristics देखिबा ये time period रे private sector प्रथम it was not mature second में economic concentration चाहू नथिले because we are more interested for equality which type of equality ना economic equality चाहूतले inequality को reduce करिया चाहूतले poverty reduce करिया चाहूतले inequality reduce करिया चाहूतले so first private sector was not mature second economic concentration न होपा हमें चाहूतले द्वितीय तो equality ensure करिया पई बा inequality in the economy aqua में decrease करिया पई चाहूतले next is the private sector is always profit oriented or maximization of profit is their objective प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड न हो बा प्रॉफिट मैक्सिमाइज न करू ये कारण पई हमें प्राइवेट सेक्टर हाथ रे सब रेस्पोंसिबिलिटी दवा पई चाहूथले दिस इज द रीजन और दिस इज द कंडीशन ऑफ द व्यूज ऑफ द इकोनॉमिस्ट माने इंडियन इकोनॉमी को टाइप रहबा को चाहूथले नाउ आफ्टर 47 हमें डिस्कस करबा व्हाट हैपेंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज द टू डिलीवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट because those decisions were going to shape the Indian economy. These are going to shape and reshape the Indian economy. Then that is why after post-independence time period, it was all about the government to choose the PMF. PMF means prime moving force. PMF means prime moving force. Prime moving force कौन? And this is a sector of the economy जदि हम economy देखबा in economy हम डिस्कस करिसथि कि we have primary sector we have secondary sector and we have tertiary sector so we have to first find out which sector is most important for us primary secondary or tertiary को कारण पई हमें देखियो चाहिए ना for the development of the economy रे development होवा पई which sector is important for us बा हम कहबा कि sector having potential to drive growth of the entire economy एंटायर इकोनॉमी को जदि हमें डेवलप करिया को चाहउछंती बा ग्रो करिया को चाहउछंती फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर इकोनॉमी व्हिच सेक्टर हैज द पोटेंशियल द सेक्टर हैविंग पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज नथिंग बट कॉल्ड द पीएमएफ बा प्राइम मूविंग फोर्स बर्तमान हम पाखरे सेक्टर कोन थिला से टाइम पीरियड रे जदि हम देखिबा either primary sector by agriculture and secondary sector by manufacturing sector by industry तो ये दीटा tertiary sector तो exist ही करू नथिला सो ये दीटा sector भितर हमको चूज करिवार अछि कि which one will be the PMF prime moving force primary sector हबो ना secondary sector हबो so depending upon the resource of a nation गोटे कंट्री रिसोर्स कोन अछि सेही अनुसार हमको पीएमएफ बा प्राइम मूविंग फोर्स डिक्लेयर करिया पड़े बा चूज करिया पड़े एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ दैट टाइम दे चूज इंडस्ट्री टू बी द प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स हिसाब रे कंसीडर करा गला वर्तमान देखिए वेदर दिस डिसीजन वाज अ गुड डिसीजन और इट वाज अ बैड डिसीजन नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर डिक्लेयरिंग इंडस्ट्री एज द पीएमएफ इंडस्ट्री को पीएमएफ करिया पई प्री रिक्विजिट्स कोन इंडस्ट्री को पीएमएफ करिया पई प्री रिक्विजिट्स कोन प्रथम प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर माने पावर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये तीनटा होची इंपोर्टेंट फैक्टर टू डिक्लेयर इंडस्ट्री एज द प्राइम मूविंग फोर्स because for industry देखो industrial belt जदि हमें देखिबा इंडिया रो let's talk about the Hooghly industrial region or you may talk about the Mumbai Pune industrial corridor so each and everywhere will be getting जोटी industrial region व industrial corridor अछि सेठी देखिबे तीनटा जिंस सब बेले थिबो पावर निश्चित किछि ना किछि थर्मल पावर प्रोजेक्ट थिबो then transportation in the sense
रेलवेज रोडवेज सहित कनेक्ट होइतो से रीजन एंड कम्युनिकेशन इजी थिबो ये जिनस थिले ही ये फैक्टर थिले ही डेवलपमेंट हो पारियो बा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो पारियो प्रथम सेकंड प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आयरन स्टील सीमेंट एंड कोल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री आपको जाए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री कौन इंडस्ट्री किछि भी हो फर्स्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री दे नीड प्लांट और द इंफ्रास्ट्रक्चर सो एमानकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होबा पई आयरन स्टील सीमेंट कोल ये निश्चित भाव दरकार बिना आयरन स्टील रे सीमेंट रे कोल रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हे परिबो नाही so second factor is we should have infrastructure industries sufficient number of infrastructure industry हम पाकर रहबा दरकार then capital for investment because business and industry they are all about the capital for investment तो capital न रहले investment हबो केमति तो प्रथमे हमको दरकार capital investment करिया पय because capital is one of the important factor of production then is the technology देखो जदि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखिबा व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री द फर्स्ट इज लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर सब हमर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे डिक्लेयर करिया पय सो टेक्नोलॉजी जदि हम देखिबा इंडिया रे टेक्नोलॉजी इट वाज नॉट डेवलप्ड वा आई कैन से इट वाज अंडर डेवलप्ड so for that purpose हमें PMF हिसाब रे चूज करि परिबानी इंडस्ट्री then is the skilled manpower it is already lecture labor is all about what you do either using the hand or anything you do by using the head तक हमें labor को then labor is very important factor because it discusses about the skilled manpower each and every type of industry they need manpower and that to skilled manpower plus entrepreneurship skill जदि न रुहे जदि लोक मानकर इच्छा ही न रुहे इंडस्ट्री पय बिजनेस प्रति then business body होनी बा इंडस्ट्री डेवलप हे परिबो नाही एंड फाइनली हमको कोन दरकार एट द एंड ऑफ द टाइम माने ने हमें देखले कि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे आर अवेलेबल जहां जहां हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दरकार से सब अवेलेबल अछि प्रोसेसिंग करिया पे हमको जहां दरकार टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर से सब हे गला स्किल लेबर हमें देखले कि लेबर भी हम पाखर अछि एंड फाइनली हमें कोन पाइबा प्रोसेस कला परे फ्रॉम द इंडस्ट्री विल गेट द आउटपुट इंडस्ट्री हमको कोन मिलियो ना आउटपुट बर्तन ये आउटपुट जीवो कोठी की ना आउटपुट बिक्री करिया पे हमको गोटे मार्केट दरकार मार्केट मींस जोठी डिमांड थिबो लोक मानकर किछि परचेज करिया पे सो विदाउट अ मार्केट इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन न किछि वैल्यू नाही सो मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स दैट इज आल्सो और द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जे पर मार्केट नथिबो से पर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गोटे रीजन हे परिबो नाही ये हला पीएमएफ इंडस्ट्री को पीएमएफ डिक्लेयर करिया पे प्री रिक्विजिट्स इन द सेम वे हमें देखिबा कि ये सातटा फैक्टर जहां हम डिस्कस करली ये फैक्टर इंडिया पाकर थिला ना नथिला नो इट वाज नॉट देयर विथ इंडिया देन जदी ये फैक्टर नथिला देन व्हाई डिड वी डिक्लेयर इंडस्ट्री एज द पीएमएफ हमें इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे कोन डिक्लेयर काहे कले वी शुड हैव डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर एज द पीएमएफ तो एग्रीकल्चर को डिक्लेयर न करी हमें इंडस्ट्री को काहे कले वर्तमान डिस्कस करी हमें एग्रीकल्चर को जदी पीएमएफ हिसाब रे हमें डिक्लेयर करिया को चाहउचंती देन व्हाट शुड बी द प्री रिक्विजिट्स द फर्स्ट इज नेचुरल and the fertile soil जदि हम इंडिया रे देखिबा we have great north indian plain east coastal plain west coastal plain plus even the deccan lava plateau they are also good for agriculture of certain type of crops we have fertile soil in india second irrigation facilities जदि हम देखिबा we have many perennial rivers like the indus river system ganga river system Brahmaputra river system apart from that we have many peninsular rivers as well so in terms of irrigation India is quite rich irrigational facilities we have the natural resources that are important for agriculture are available in India first point second is the human capital number भी जदि हम देखिबा India then that is also quite good or available because maximum लोक इंडिया रो they involved in आजिका डेट रे जदि हम देखिबा then 54% involved in agriculture whereas agriculture is responsible only for 16% of the GDP only for 16% of the GDP so human capital is always good in India for the agricultural purpose by agriculture करिया पय because जदि हम इंडस्ट्री डिक्लेयर करिवा से समय रे इंडिया रो लेबर दे आर नॉट स्किल्ड they are always unskilled so unskilled labor manako pai the best place always is agriculture
दो आम साइंटिफिक एग्रीकल्चर करि परिबानी अनस्किल्ड लेबर को नहीं स्टिल एग्रीकल्चर से किसी ना किसी प्रोडक्शन करि परिबा एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज बा अदर फील्ड्स सो ह्यूमन कैपिटल भी इंडिया रे अवेलेबल थिला बर्तन ऑल दिस टू फैक्टर्स टू डिक्लेयर एग्रीकल्चर एज द पीएमएफ दे वर अवेलेबल इन इंडिया ताले आयरनिकल कथा हे गेला वर्तमान इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करबा पई जहां जहां फैक्टर दरकार दे वर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर को पीएमएफ करिया पई जहां जहां दरकार से सब इंडिया रे अवेलेबल थिला एग्रीकल्चर पई जहां दरकार प्री रिक्विजिट्स थिला इंडस्ट्री पई जहां दरकार नथिला then why did we choose industry as the prime moving force instead of agriculture? We should have chosen agriculture as the PMF. Now we'll discuss what was the objective of the political leadership, why they choose industry as the PMF. They are able to analyze the consequence. Still, कौन पैंस मान choose कले? Let's discuss. First, I am discuss कले कि the resource for agriculture in India we have those resources, but ये जो resource अच्छे हम पकड़े they are completely traditional. There is no use of technology. एटी कौन सी टेक्नोलॉजी रो यूज होनी जदि टेक्नोलॉजी रो यूज न हुए then production quantity of production will always less technical use जदि हम न करिया production will always be less तो जदि production कमी गला then automatically gross domestic product कोंतु बा per capita income कोंतु बा national income कोंतु ये सब कम हे चलियो हेलो नितुश्री आम आज डिस्कस कर इंडियन इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कर सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन न बुझी पारे तुम रेज योर क्वेश्चंस एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू योर ओपीएससी एग्जाम ओएस एग्जाम प्लस एएसओ एग्जाम सो पीएमएफ जदि हम देखिबा एग्रीकल्चर को चूज करा गला एज द पीएमएफ एंड एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर को कहीं चूज करा गला नहीं हम से कथा डिस्कस करचंती देखले कि एग्रीकल्चर इट वाज कंप्लीटली ट्रेडिशनल देयर वाज नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट इज व्हाई हमें एग्रीकल्चर को चूज करले नहीं एठी प्रथम कथा देन जदि हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्न फॉर्म रे करूचंती टेक्निकल वे रे करूचंती एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देन वी हैव टू इंपोर्ट दोज इक्विपमेंट्स हमको इक्विपमेंट गुडा को सब इंपोर्ट करियो पड़ियो फ्रॉम द फॉरेन रिजर्व फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज जदि हम फॉरेन कंट्री रो इक्विपमेंट आणुचंती इंपोर्ट करूचंती देन डेफिनेटली आर इंपैक्ट पड़ियो फॉरेन रिजर्व ऊपर एंड ड्यूरिंग 1950s हम पाकर फॉरेन रिजर्व भी सेते स्ट्रांग नथिला बा सेते भल नथिला सेते स्ट्रांग नथिला नितुश्री वर आस्किंग क्वेश्चन प्लीज रेकमेंड बुक्स फॉर जूलॉजी ऑप्शनल and books for economy कहूची डीवी सीरीज तुम क्वेश्चन अभी आंसर दउची सो देखो नितुश्री जूलॉजी ऑप्शनल ऊपर मोर नॉलेज नहीं आई कैन गाइड यू फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड आई कैन गाइड यू फॉर जीएस पेपर्स इन केस ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक्स पई जदी भलो बुक देखबे देन इट इज आई विल एडवाइज एनसीईआरटीज यार फर्स्ट क्लास रे ये सीरीज रो फर्स्ट क्लास रे मु डिस्कस करथिली कोन बुक पढिया दरकार देखि परिबो सेतरु स्ट्रेटजी सीरीज सेशन एनसीईआरटी बुक पढो 11th 12th आर मोस्ट इंपोर्टेंट जदि पारुछ रमेश सिंह रो किछि सिलेक्टेड सेक्शन पढियो रमेश सिंह रो किछि सिलेक्टेड सेक्शन अल्प किछि सेक्शन पढियो एंड इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस जदि क्लास अटेंड करछो देन आई विल एडवाइज मेक नोट्स आउट ऑफ इट एथरु नोट्स करो दैट विल बी सफिशिएंट सेति कि नोट्स करले रमेश सिंह रे more than requirement अच्छी किसी concept some concepts are more than as per the requirement so किसी selective study करो बाद यदि class करछो then class notes करो that will be more than sufficient then DV series you are asking for camera को corner को नवा पई लेखा गुडा को कटि जाउची okay I agree I will look into the technical problem what happened first second you can download all these PDF from the Unacademy app itself the description box रे explanation has been given you can download the Unacademy app यहाँ पर मोर special class अच्छे and same PDFs are available in the app itself that is completely free of cost ठीक अच्छे ये सब डाउनलोड करि परिबो तो माने Unacademy app डाउनलोड करो and from the Unacademy app प्रत्येक PDF जहां मैं एठी पढुचंती बा YouTube session व्यतीत बहुत गुटे स्पेशल क्लास भी मु ऑलरेडी नेछि इन Unacademy app ताकू भी डाउनलोड करि परिबे ठीक अछि
then plus subscription price from the month of March it is going to increase. March masaru plus subscription price increase hejibo, course fees increase haba ko jauchi. So those who are interested subscribe to Unacademy Plus in this month February re subscription niyantu. Use karantu referral code EGOS EASYOAS lage lekhibe space na dei, so that 10% discount will be there upon your subscription amount. यदि ये कोड यूज करछंती आई अंडरस्टैंड पीपीटी टॉप कॉर्नर टा कटि जाउची, ठीक अछि हम एटा को देखिबा ठीक कर दबा। एमतिर तो मु लेखि के बुझौची, वर्तमान बुझो जोटा न बुझी परियो मते को आई विल डेफिनेटली आंसर। ए जो प्रॉब्लम कहलो पीपीटी कॉर्नर आई विल लुक इनटू इट, एटा को मु फिक्स कर देबी सेटिंग चेंज करके, ठीक अछि। एबे तो क्लास मझिरु करि परिबानी, आफ्टर द क्लास आई विल चेंज इट। सो एग्रीकल्चर ऊपर हम डिस्कस करथले कि काहे को पीएमएफ हिसाब रे चूज करा जायछि बा प्राइम मूविंग फोर्स हिसाब रे काहे को चूज करा जायछि, सॉरी काहे की चूज करा गला नाही। एग्रीकल्चर रिलेटेड सब रिसोर्स हम पाखरे थिला, ईच एंड एवरी रिसोर्स जहां जहां वर्तमान मु डिस्कस कली, जेमति कि फर्टाइल लैंड रु आरंभ करी इरिगेशनल फैसिलिटीज, देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, ये सब हम पाखरे अवेलेबल थिला। स्टिल ये सब हमें यूज करी एग्रीकल्चर को पीएमएफ चूज न करी वी चूज इंडस्ट्री। एथि पई हम एग्रीकल्चर को एठी चूज कले नै, जदी एग्रीकल्चर को हम टेक्निकल एग्रीकल्चर टेक्निकल वे रे एग्रीकल्चरल फॉर्मेशन प्रैक्टिस करिया को जाउछन, देन वी नीड there is requirement of technical equipments, and those technical equipments we can purchase from the foreign countries. So for that we need foreign reserve, हम foreign reserve आवश्यकता अछि। So industry को आज पीएमएफ हम एथि पई चूज कले कि इंडस्ट्री रहिले प्रथम कथा हमें मॉडर्नाइज करि परिबा हमरा एग्रीकल्चर को, बिकॉज़ इंडस्ट्री को यूज करी हमें टेक्निकल इक्विपमेंट प्रोडक्शन करि परिबा, एंड दोस टेक्निकल इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन हम करि परिबा, एला प्रथम कथा। Then 1990 पूर्वरु जदि हम देखा 1950 जो समय इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला, ये टाइम पीरियड रे डोमिनेंट आइडियोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड, जेमति कि मु कहबे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये समस्त एग्रीकल्चर को देखुतले एज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस। द कंट्रीज व्हिच आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर दे आर बैकवर्ड कंट्रीज, एवं जो कंट्री माने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करूनांती सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को इंपोर्टेंस दोचंती, दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज। तो पॉलिटिकल लीडरशिप देखिला से समय रे इंडिया रे कि हम एते परिश्रम करी कि नेशनल मूवमेंट द्वारा इंडिपेंडेंस पाइले, स्वाधीनता पाइले, एंड फाइनली हमें इंडिया को गोटे फॉरवर्ड डायरेक्शन देखियो चाहिबा, बैकवर्ड डायरेक्शन नुहे, बा इंडिया को किए गोटे अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड कंट्री को हमको सुनिया को भल लागेओनी। सो इंडिया को फॉरवर्ड डायरेक्शन रखिया पई, गोटे डेवलप्ड कंट्री मान को भीतर रखिया पई पीएमएफ हिसाब रे हमें इंडस्ट्री को चूज कले। सेकंड वर्ल्ड वॉर ये टाइम पीरियड सुधा ही सारी थिला, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रूव कर सारी थिला मिलिटरी सुप्रीमेसी। द कंट्री को सेही कंट्री सेते स्ट्रांग बा से कंट्री सुप्रीम जहार मिलिटरी पावर अधिक। सो मिलिटरी पावर बा डिफेंस पावर आसे केमती, डिफेंस पावर आसी परिबो ओनली फ्रॉम द इंडस्ट्री। जेतोळे हम पाखरे इंडस्ट्री डेवलप सेतबळे ही हमें डेवलप मिलिटरी पावर करि परिबा। जदि हम इंडिया कंडीशन देखिबा से समय रे इंडिया कंडीशन देखिबा, देन देयर वाज थ्रेट फ्रॉम बोथ द साइड्स। वर्तमान मध्य एपटू बाय पाकिस्तान फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्टर, फ्रॉम द ईस्टर्न सेक्टर बाय चाइना। बाय ये रीजन तुमर एबे भी अछि एटी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड ऑक्साई चीन, ये रीजन। तो ये कारण पई इंडिया तार मिलिटरी फोर्स को डेवलप करिया पई चाहुतला। देन इंडिपेंडेंस पूर्वरु जो माने सोशल साइंटिस्ट थिले, जो माने इंडिया रे इंडिपेंडेंस पई काम करथिले, बा इकोनॉमिस्ट थिले, से माने चाहुतले इंडिया मॉडर्नाइज कंट्री हिसाब रे कोना जाऊ, इंडिया गुटे डेवलप्ड कंट्री मान को भीतर रो, ना कि गुटे अंडर डेवलप्ड कंट्री मान को भीतर रो। ये कारण पई से माने एग्रीकल्चर को पीएमएफ हिसाब रे चूज न करी इंडस्ट्री को पीएमएफ हिसाब रे चूज कले। एंड बाय द एंड ऑफ 1947 हमें देखिले कि द पावर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ऑलरेडी प्रूव्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन ना पावर अछि बिकॉज़ इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूची। So there was no doubt about the efficiency of the industries and industrialization. So for that purpose finally industry को हमें PMF हिसाब रे चूज कले। But 2002 is considered to be the year of transformation। काहे कि 2002 को year of transformation कहा जाए। 1990 सुधा entire world they changed their perception towards agriculture। काहे कि मानकर परसेप्शन बा चिंताधारा एग्रीकल्चर प्रति चेंज हैला, एंड एग्रीकल्चर को माने मानेले कि दैट दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस। जो माने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करछंती से माने बैकवर्ड नहंती, रादर से माने डेवलप्ड भी हे पारंती। केमते डेवलप्ड हे परिबे ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करी प्रथमतः,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करी फॉरेन कंट्री को एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री करी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये सब करके माने डेवलप हो पारिबे देन for that purpose India again in the year 2002 declared agriculture as the prime moving force 2002 मसिया रे इंडिया एग्रीकल्चर को अगेन प्राइम मूविंग फोर्स हिसाब रे डिक्लेयर कला then planning commission से टाइम रे थिला एंड प्लानिंग कमीशन आल्सो advocated in the favor of agriculture sector as the PMF for India प्रथम कथा जदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पीएमएफ बोली डिक्लेयर करूछंती देन इकोनॉमी विल डेवलप and we can achieve the most important fact that is food security we can achieve is food security because food security is important for the entire country food security not automatically food shortage that will lead to nutrition deficit and less human resource development starvation death and all those so food security जब हम देखा 1950s ये टाइम रे इंडिया had a very negative concept of begging bowl image throughout the world इंडिया कौन करथला ना फूड ग्रेन इंपोर्ट करिया को चाहूतला अदर कंट्री मान को सो इंडिया had a negative image of begging bowl and ये टाइम पीरियड रे हमें डिसाइड कले कि प्लानिंग कमीशन भी आर्गुमेंट देले कि नहीं एग्रीकल्चर शुड बी टेकन एज द PMF then agricultural products they can be exported in the world trade organization regime plus agriculture को जदि हम इंपोर्टेंस दउचंदी पॉवर्टी एलिवेशन भी करि परबा ये सब कारण मानक पई फाइनली इन द ईयर 2002 we adopted agriculture as our PMF so 2002 परठु जदि हम देखि आछिबा बहुत गुडे बार सही समय टू जेतोळे हम एग्रीकल्चर को एज द PMF बोली डिक्लेयर कले गवर्नमेंट फोकस करि आसुची एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर 2000 रे आसला नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इन द ईयर 2000 ये पॉलिसी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 रे एग्रीकल्चर को कंसीडर कला एज एन इंडस्ट्री जेमति इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुए सेमति एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट हो बोली ये कंसीडर कला सेकंड 1999 रे आसिला नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम सो इंश्योरेंस सीड पई सोइंग पई मार्केटिंग पई फॉर द रिस्क जोटी रिस्क इन्वॉल्व एग्रीकल्चर से सेक्टर पई एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम यूज करा गला 2002 रु 2007 भीतर आसिला हम पाको एक्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हमें केमति करि परिबा याकू इंपोर्टेंस दिया गला 2004 सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन देन भारत निर्माण जोथरे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर याकू इंपोर्टेंस दिया गला सो 2002 ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अधिक इंपोर्टेंस दे आसुची सो दिस इज ऑल अबाउट PMF or evolution of the Indian economy हमें आज सेशन में डिस्कस करले evolution of Indian economy and in this session evolution हमें कौन डिस्कस करले ना PMF कौन चूज करा गला 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस पाइला परे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री या भीतर इंडिया चूज कला इंडस्ट्री को PMF हिसाब रे and choose करिवा रीजन देखिले कि what was the cause behind this कोन पई चूज कला इंडिया एग्रीकल्चर को as the industry को as the PMF this was taken as the PMF then agriculture sector again in the year 2000 हमें PMF हिसाब रे एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज कल सो ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे पारे बा या ऊपर किछि कांसेप्ट ऊपर प्रीलिम्स रे क्वेश्चन पचरा जाय पारे In the same way, the entire concept of economics and social development, Indian polity and constitution, I will cover in Unacademy Plus. Download the Unacademy app. Explanation has been given in the description box. And please remember from the March 2021, there is going to be a price hike in the course fees. So before the price hike, subscribe to Unacademy Plus. Use the referral code EGOS EASYOAS without any space so that you will be getting 10% discount upon your subscription amount. So special class Unacademy app रे आपण करि परिबे जोथरे recently high court ASO पई secretariat ASO पई OS exam both pre com mains पई batches start हेछि and we have many educators for each and every subject
एमती नहीं कि geography economics रे you will get only a single educator, rather we have many educators for the same subject. We have many batches in each and every week. We are creating new batches for the upcoming RI and admin batch, High Court ASO ପାଇଁ batch ଚାଲିଛି, Secretariat ASO ପାଇଁ batch ଚାଲିଛି, OS exam ପାଇଁ pre-com mains ପାଇଁ batch ଚାଲିଛି. So subscribe to Unacademy Plus and let's crack it. You can use this referral code EasyOS to get 10% off upon your subscription amount. So प्रत्येक exam ପାଇଁ ଆପଣ comprehensive preparation କରି ପାରିବେ from the Unacademy app itself with the best educators from Odisha. So that's all for today. See you in the next class. Thank you everyone. Have a good day. Tomorrow at same time at 10:30 we'll discuss some other concepts.